Good morning everyone. I am Subhashri Das. Today we will discuss about pituitary gland. So pituitary gland is also known as hypophysis. It is also known as hypophysis. Why it is called as hypophysis? Because it is present under the hypothalamus. In its location, it is present below the hypothalamus and also controlled by the hypothalamus. That's why it is known as hypophysis. So next, what is the size of pituitary gland? It is also, its size is P-shaped. P-shaped meaning मटर दाना टाइप रो साइज तमरा आसीबो. Here is the clear diagram. It is in left side, it is your brain. This region is hypothalamus and below it, this region is, it is your pituitary gland. Here you can see upper side it is hypothalamus and here this side is inside, below it is the pituitary gland. First one is anterior pituitary and this side is posterior pituitary. So where pituitary gland is located? It is located inside the sella turcica. Sella turcica is nothing but a small depression which is present in the sphenoid bone. Sphenoid bone. So basically, pituitary gland is located below the hypothalamus in between the sphenoid bone where a small depression is found known as sella turcica. Sella turcica. So it is a small depression found inside the sphenoid bone. तो से जो डिप्रेशन टाइप रो बा टिके दबिला भलिया बा खालुआ भलिया प्लेस अच्छे सेठी तमरो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट अच्छे. So mostly hypothalamus controls the pituitary gland. Pituitary gland has two parts as mentioned. First one is anterior pituitary or known as adenohypophysis and the posterior part is known as neurohypophysis. So आमे कौन देखिबा normally pituitary gland जदि question आसीबो तो हमरा आसीबो what is a pituitary gland, what is its location. So location जानलो below the hypothalamus in the brain, below the hypothalamus inside the sphenoid bone there is a small depression known as sella turcica. तो सेठी तमरो pituitary gland present थाए. Next, pituitary gland has two parts. One is anterior pituitary and another one is posterior pituitary. So next,
सो आमे बोथ जो पिट्यूटरी अच्छी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आमे फर्स्ट देखिबा एंटीरियर पिट्यूटरी बा एडेनो हाइपोफाइसिस. So anterior pituitary is also known as master endocrine gland. Why it is known as master endocrine gland? Because it makes 6 hormones, and out of 4 which hormones are known as trophic hormones, it means they stimulate other endocrine glands. So जेहेतु एते सारा hormones release करूची तो anterior pituitary को आमे कौन कहू master endocrine gland. सो आमे नेक्स्ट देखिबा से जो 6टा हार्मोन रिलीज करूची कौन कौन आ तांकर फंक्शन कौन. सो फर्स्ट आसुची ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन कौन by GH it stimulates the cells to grow in size and divide it stimulates the target cells to grow in size and to divide. तो ग्रोथ हार्मोन काम कौन से टारगेट सेल्स जो भी सेल्स अच्छी ताकू साइज रे ग्रो करिया पई और डिवाइड करिया पई स्टिमुलेट करे. जेमती कि तमे कहि परिबो बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स. तो नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन काम से बॉडी रे जो सेल्स अच्छी ताकू ग्रो करेबो बाय डिवीजन करेबो जा फल से माने साइज रे इंक्रीज करिवे. नेक्स्ट जदि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कमी जीवो बा बढ़ी जीवो देन कौन प्रॉब्लम होबो. कौन करिवो तीनटा जिनिस करिवो. वन इज हाइपोसिक्रेशन. इट मीन्स डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन which will cause pituitary dwarfism. Pituitary dwarfism. Another one is hypersecretion. Hypersecretion माने कौन too much of hormone in childhood, that is known as gigantism. So gigantism normally कौन जत्ता बड़े तमरो हार्मोन अधिका सिक्रेशन माने हे जीवो तो से कौन करबो आवश्यकरू अधिका ग्रोथ करेबो. छोट छोट पिला जो माने थांदी तांको पाखरे अधिका ग्रोथ हे गले से माने छोट छोट एज रु बड़ पिला भलिया देखा जाती. अधिका हाइट हो जाए, हेल्थ ग्रोथ अधिका हो जाए. सो सेटा को कहते जाइगांटिज्म. सेमती जदि एनफ सिक्रेशन न हबो ताले ड्वार्फिज्म माने बेसी साइज इंक्रीज करिवोनी कम ही रही जिवो. हाइपर सिक्रेशन इन एडल्टहुड, acromegaly, that is large facial bones, hands and feet. फेसियल बोन्स गुरा टिके माने बड़ा बड़ा साइज रही जीवो, मुहटा बहुत बड़ा देखा जीवो. आउ हैंड्स फीट्स एगुराकर बोन साइज माने अधिका हे जीवो. सो एगुरा होची ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट आसिला टोटाल 6टा हार्मोन अच्छी. फर्स्ट हार्मोन गला ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी जेहेतु मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तार सबू कौन कौन हार्मोन से सिक्रेशन करुच्ची एंड तार फंक्शन एथरू ही बेसिकली तुमर माने बेसिक क्वेश्चंस आसीबो. सो फर्स्ट गला ग्रोथ हार्मोन. ये सब एबे एंटीरियर पिट्यूटरी डिस्कशन चलछि. सेकंड वन इज प्रोलैक्टिन. सो प्रोलैक्टिन कौन? प्रोलैक्टिन तुमर कौन करुच्ची it helps in the development of milk gland in breast and stimulate the milk production after childbirth. So कौन करे नॉर्मली ग्लैंड्स जो अच्छी ब्रेस्ट रे मामारी ग्लैंड रो स्टिमुलेशन करे जहाँ फल कि मिल्क प्रोडक्शन हुए आफ्टर चाइल्ड बर्थ. इट हैज़ नो फंक्शन इन मेन. सो प्रोलैक्टिन कोडी हेल्प करे मोस्टली फीमेल मानका केस रे हेल्प करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट and stimulates the milk production after childbirth. दिटा गला. Next is adenocorticotrophic hormone ACTH. It is also produced by the anterior pituitary. And what is its function? It regulates the hormone production of the cortex portion of adrenal gland. Cortex means normally upper portion, upper side ta. Cortex portion of adrenal gland
and stimulates the melanocytes in the skin to produce the melanin. जो मेलालिन प्रोडक्शन हुए तो तादरे जो मेलानोसाइट सेल्स अच्छी जो माने आकु स्टिमुलेट करती तो से माने सेटा कहा द्वारा हुए तमर एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा तो यहाँ तमर मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करे जहाँ फल मेलानिन प्रोडक्शन बढ़े. नेक्स्ट देखा तमर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा टीएसएच. टीएसएच कौन करे नॉर्मली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करिवो पिट्यूटरी रु रिलीज हबो आउ कौन करिवो कंट्रोल एंड ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. सो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रो फंक्शन कौन से थायराइड ग्लैंड को ग्लैंड रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करिवो for which thyroid gland will secrete the thyroid hormone T4 T3 ए हार्मोन सब रिलीज करिवो. सो TSH रो काम कोन ओनली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करिवो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. यस नेक्स्ट कौन आसला 5 नंबर रे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन जेमती नेम रे अच्छी दे रेगुलेट द हार्मोनल एक्टिविटी ऑफ गोनाड्स दैट मीन्स टेस्टिस एंड ओवारी. जो गोनाड्स अच्छी तमर तांकर रेगुलेशन बा हार्मोनल एक्टिविटी को रेगुलेट करती गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स. नेक्स्ट आसला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा एफएसएच. एफएसएच रो फंक्शन कौन इन फीमेल एमाने बोथ मेल एंड फीमेल ले हेल्प करती. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल मानकरे कौन करिवे स्टिमुलेट्स द फॉलिकल डेवलपमेंट इन द ओवारीज. ओवारीज रो जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुए सेतरे हेल्प करती and production in also helps in menstrual cycle and production of eggs in ovaries. ता छड़ा मेल्स रे माने कौन करती in male they stimulate the spermatogenesis and maturation of sperm. They just stimulate sperm development by maturation of sperm and stimulate the spermatogenesis. ये गला FSH follicular stimulating hormone. नेक्स्ट आसला ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कौन LH. ये भी बोथ मेल एंड फीमेल केस रे यूटिलाइज हुए. सो फर्स्ट फीमेल मान केस रे ये कौन करे इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट और ट्रिगर द ओवुलेशन. ओके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कौन करे ओवुलेशन को स्टिमुलेट करे बा ट्रिगर करे ताको छाड़िले इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरॉन आल्सो which helps in pregnancy or which helps or supports during the months of pregnancy. So एटा गला फीमेल केस. मेल ले कौन करे मेल ले भी it also stimulates the testosterone production by interstitial cells of testis. टेस्टिस जो अच्छी टेस्टिस रे तमर कौन करे इंटरस्टिशियल सेल्स अच्छे जो मानक स्टिमुलेट करे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. सो ये गला ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. तो ये जो छटा रहिले एमान सब एंटीरियर पिट्यूटरीज रो हार्मोन्स रहिले. नेक्स्ट आमे देखिबा पोस्टीरियर पिट्यूटरी. Posterior pituitary is also known as neurohypophysis. तो posterior pituitary कौन आसला that doesn't they do not make the hormones it releases. एमाने जो हार्मोन रिलीज करती एमाने
को पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेनी. दे आर मेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स देम. सो जेहेतु आम कहते हाइपोथैलेमस एम कंट्रोल करुच्ची तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन हुए जनरली तो जो भी हार्मोन्स तुमर हाइपोथैलेमस रो रिलीज हुए से आसिक एठी पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर होती. They are controlled by the nerve impulses from the hypothalamus. या माने कौन जमती जमती कि थायराइड हार्मोन केस रे होउथला सपोज हाइपोथैलेमस किछि गोटे स्टिमुलेट कला बा सिक्रेशन कला और सही हार्मोनटा जाई कि तमरा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करिवो टू प्रोड्यूस सम हार्मोन. सो ये डायरेक्टली किसी करते हाइपोथैलेमस रु नर्व सिग्नल बा सिग्नल आसला पर जाइंकी एमाने रिलीज करती. इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन करे दीटा हार्मोन को रिलीज करे. One is your oxytocin which stimulates and which stimulates the contraction of uterus during childbirth and ejection of milk. तो ऑक्सीटोसिन मेन रोल कौन स्टिमुलेट द कंट्राक्शन ऑफ यूटरस ड्यूरिंग चाइल्ड ब्रथ टाइम रे यूटरस कंट्राक्शन कराए सो दैट पिलाटा इजिली बाहर के आसी पारिबो. एंड द इजेक्शन ऑफ मिल्क इजेक्शन ने हेल्प करे. किंतु मिल्क प्रोडक्शन और ये किए हेल्प करे तमर प्रोलैक्टिन है. सो ये दुटा क्वेश्चन बहुत थर आसे कि प्रोलैक्टिन फंक्शन और ऑक्सीटोसिन फंक्शन. तो मिल्क उपरे जो क्वेश्चंस आसे तमर ट्रिपल एस एग्जाम हो जेई हो तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड मिल्क प्रोडक्शन ने हेल्प करे तमर प्रोलैक्टिन बट रिलीज बाय इजेक्शन ने हेल्प करे तमर ऑक्सीटोसिन. दुई नंबर रे कौन आसला एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो बा एडीएच आमे को ये कौन करे इट कॉजेज द किडनीज टू रीअब्जॉर्ब मोर वाटर एंड डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम. एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन करे डायूरेटिक नॉर्मली कौन डायूरेटिक जदि कॉलेज रे पढ़िथिबो डायूरेसिस द्वारा तमर मोर यूरिन बा मोर वाटर आ सोडियम फ्लो हो जाए यूरिन में. सो एंटी डायूरेटिक मीन्स से डायूरेसिस को बंद करबो. इट मीन्स मोर वाटर रिअब्जॉर्प्शन करे दबो सो दैट लेस यूरिन रिलीज हबो. And it also increases the blood pressure by causing constriction of the arterioles. And secretion of ADH is inhibited by alcohol. जदि अधिका सिक्रेशन है हाई ब्लड प्रेशर करिवो आ जदि कम सिक्रेशन है डायबिटीज इंसिपिडस करिवो. So this is all about your pituitary gland and its hormone and their function. Thank you.